Here at IRM, I've been placed in monitoring and evaluation department as a summer intern, and I'm doing research under the supervision of Sir Shayan Latif. And I have improved my research skills so far, and I am also planning to pursue the same field in future as well. I got to learn कि एक रिसर्च कैसे करते हैं. Coming from a background जहाँ पे मैंने A-levels में कभी रिसर्च के बारे में पढ़ा नहीं था, लेकिन I got to learn कि एक रिसर्च कैसे की जाती है. सेकेंडली हमारे बहुत से विजिट्स हुए जहाँ पे हमें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली कि IRM किस तरह काम करता है, RSPs किस तरह काम करती हैं, डेवलपमेंट सेक्टर किस तरह प्रोग्रेस करता है. IRM मेरे लिए एक सबसे पहली अपॉर्चुनिटी थी इनटू द प्रोफेशनल लाइफ, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट सो फार. और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है. हाउ द डिपार्टमेंट वर्क्स, अबाउट द ऑफिस एनवायरनमेंट. यहाँ सब कोविड SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं. उसके अलावा मेरी सुपरवाइज़र ने मुझे रिसर्च के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया है. एज I'm working on the research paper right now. IRM was a great opportunity of my life, and I think I'm going to cherish it. पिछले एक महीने से हम लोग जा रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ वगैरह में और विज़िट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं कि IRM कैसे अपने काम करता है. और इस सब में हमारे लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी था. ऑफिस एनवायरनमेंट हमने देखी है किस तरह होती है, सारे काम होते हैं ऑफिस में. और इसके अलावा बेसिकली एक बहुत अच्छा ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस था. During the course of this internship, I learned many skills like networking, research writing, report writing, communications. I'm very thankful to IRM for providing me with this opportunity so that I could excel in my research skills. This experience of field research will absolutely serve me in my future. So I'm very glad that I opted for this opportunity.